Hi everyone, so we have met before and this is the second video which I'll be making, wherein I will be telling you the tricks and tips how you could do well in your residency. So by the way, my name is Dr. Samruddhi. I'm a medicine resident. I'm doing my residency from Maharashtra, and medicine in the sense internal medicine. And I joined on 12th of Jan, and it's been 1.5 months, successful one and a half month of doing residency. So there are a few of the tips and tricks which will help you sail through residency better, and not just medicine residency but any residency better, you see. So amongst, so I've written down, if you can see, I'll be repeating it. So some of the tricks and tips which would be helpful for you, via which you could do things quicker. Okay, so the first thing, and when you do things quicker, you get more time to eat, to sleep, and more time for your own self. Otherwise, if something which can be done in 1 hour, if you're taking 2 hours, you are utilizing more of your time, more of your me time, right? So few tricks to do things faster. So the main work as medicine residents is basically, there are few works which are fixed. Okay, so blood collection is something which you have to do. So in maximum of the institutions there are patho people who come twice or thrice a day and collect blood. However, on holidays you yourself as a medicine resident with the help of interns have to collect the blood, but interns may or may not be there, right? So you have to collect the blood on a holiday. So what one trick you can do, if you have 5 blood collections, that what I do, what I've seen my seniors do and everyone do is कि for collecting the blood, how can you do blood collection quickly, because blood जाना है collect करना ऐसे नहीं होता है. When you have to collect the blood, as we all know, or you have to take the vials of the specific color, plain, EDTA, sodium fluoride. ठीक है, many a times plain is absent, in this institution plain is absent. In my UG institution, purple EDTA used to always be absent. So वो लाना पड़ता है, right? सो वो लाना पड़ता है. उसके बाद सिरिंज नीडल होता है. सो सिरिंज मैनी टाइम्स फॉर न्यू पीपल हु हैव जस्ट गॉटन एडमिटेड, ठीक है, न्यू एडमिशन ऑन कॉल के दिन पे न्यू एडमिशन वाले लोगों के पास उनका खुद का सिरिंज नहीं होता है. सिस्टर्स आर नॉट हैविंग इट इन देयर स्टोर, ठीक है, उनको इंडेंट करना पड़ता है, आया नहीं होता है. सो यू हैव टू टेक इट फ्रॉम अनदर पेशेंट, समटाइम्स बोरो, और यू हैव टू स्टील इट फ्रॉम अनदर पेशेंट, राइट? एंड देन वंस देयर स्टफ कम्स बैक, यू हैव टू गिव इट बैक. वो करना होता है. स्टिकर राइट लगाना होता है, ऑनलाइन एंट्री करनी होती है, पैथो बुक में लिखना होता है. सो ब्लड कलेक्शन इज नॉट जस्ट अबाउट गोइंग, प्रिकिंग द पेशेंट एंड पुटिंग इट इन द bulbs. It is also about doing other things. So if you end up doing these 5 things for each patient separately, it is going to utilize a lot of your time and you are going to do things very slowly. So what you have to do for making blood collections quickly is, you have to basically collect all the bulbs. So if I have to take send routine of 5 patients, ठीक है, सो एक पर्पल एक रेड. सो आई हैव 5 पेशेंट्स, राइट? सो 5 पर्पल और 5 रेड मैं अपने पास रखूंगी, ठीक है. देन फ्रॉम द ईच ऑफ द फाइल ऑफ द पेशेंट यू हैव टू टेक आउट द स्टिकर एंड यू हैव टू पुट द स्टिकर. सो कीप these things ready with yourself before you go and you prick the patients, right? ये आपको करना है. Then you have to have, so keep all these bulbs ready in your pockets. Okay, second thing which you have to do is you have to take the some cotton. Okay, cotton, you have to get some dry cotton, and some cotton you put sterilium on it. Okay, multiple pieces of cotton, put it in your another pocket and take sterilium with you. Okay, no, don't take the sterilium with you. On some cotton put sterilium and keep it in your another pocket. Okay, so you have kept it ready. Then you have to have extra pair of gloves also in your 1-2 pairs of gloves in your. You don't have to change the gloves for every patient, frankly speaking. So you wear right and left glove, and keep one glove in your pocket just to tie as a tourniquet. Many a times tourniquet is not available, so we tie the glove as the tourniquet. Okay, so keep that ready. Now you're ready with your stuff.
About syringes, each patient will have their own syringe. In case they don't have it, you have to take extra from right and left, and that is a very tedious work. Okay, so if you get extra syringes, I'm not saying you should buy, but in our place we can get extra syringes from MICU, medicine ICU, or surgical ICU. So we do that and we keep it with us in store. I sometimes buy syringes because I don't want to waste my time. It's not that I'm wasting my money, but it's just that I don't want to waste my time in finding syringes because it becomes very tedious. So I sometimes have in my bag my own store of 5 ml and 10 ml syringe, and most importantly 2 ml syringe, which are very important for ABGs, right? Also, you have to have your own heparin, by the way, just because I mentioned it. For the this thing, you should have it in your pocket only. So you're ready with everything. Keep everything in your lab coat ka pocket. Now you go from patient to patient, and what you do is you go to patient number A. ठीक है, you go, you have your stuff ready, take out the bulbs, recheck the name with the patient. Okay, you have your own syringe. Okay, if they have it, great. If they don't have it, just don't even ask right and left. It is very tedious. So just take out your syringe, pull out the blood, put it in the respective bulbs. Okay, and just after you're done with it, okay, keep the things to discard right there on the patient table. So जो बल्ब है पेशेंट के पास ही रखना कि ये आपके पास रखना है, ये बाद में मैं आके उठा के लेके जाऊंगी. Keep the cotton, used cotton, okay, and the used syringe needle with the patient. So the things which you have to throw in the respective bins, keep it with the patient. Sample of the patient also, keep it with the patient. So you're done with patient number A. Sample and the other things to discard are also with the patient. You're done with it. Then rather than going to the nursing counter for discarding and all, and to keep one sample, एक sample लिया जाए, आपने एक sample लिया, आप वो पैथो के बॉक्स में डब्बे में रखने को गए, फिर आपने यहाँ वहाँ उस ये वाले रेड में येलो में डिस्कार्ड किया. It becomes very tedious and frustrating for you when you have multiple blood collections, right? So did the blood collection for one patient, that's it. Keep sample and other material to discard with the patient. Go to another patient B, collect blood, keep everything with the patient. Do all the patients together. So now after you're done with it, go from each patient to patient, how you would remember your patients, take their blood samples collected wala, keep it with you or in your pocket. ओके, एंड जो उनका मटेरियल है डिस्कार्ड करने का सबका एक साथ लो. सो आफ्टर यू सबका डिस्कार्ड करने का मटेरियल आपने एक साथ लिया, कॉटन आप जाके येलो में डाल दो, देन योर नीडल यू पुट इन द वाइट वन, एंड योर सिरिंज यू पुट इन द रेड वन, ग्लव्स यू पुट इन द रेड वन. Okay, so this is how you are going to keep everything prepared ready first. Then do all the blood collections together, discard everything together, keep all the blood collections in the box. After you're done with it, then only you would go and put the entry online. का entry सब patients का एक साथ डाल दो और सब patient का patho book में एक साथ लिखो. So see to it that online entry and patho book entry is done later on. If you do everything beforehand ना, blood collection के लिए delay होता है. Then your seniors would be like, अभी तक एक भी blood collection नहीं किया. How can you explain it to them कि मैं पहले सबकी entry कर रही थी, because that is nothing for them, right? They are like, अरे entry तो ऐसे हो जाती है, but it's not like that. You have to go on patient, select the patient, sometimes even type the UMR of the patient, right? So do that. So this is the first tip to do blood collections quickly. Second tip which I would give you people is ki, as not as interns, first tip was also useful for interns, but second tip is also so first tip of blood collection is also applicable to interns. Second tip is going to be of while checking the HGT of the patient, ठीक है, glucose of the patient, sugar of the patient. So which interns don't have to do, so it's only for the residents, especially medicine residents. So in the morning you have to check their sugar, and pre-meal and pre-meal in the afternoon and pre-meal in the night. Thrice a day you have to check their sugars. So you have to have a collection of, you should have a collection of your own needles in your bag, because many patients don't have their own needles. Even when you take out their needle and you tell them कि ये needle separately रखना आपके लिए शुगर चेक करें, वो घुमा देंगे, ठीक है. मेनी पेशेंट्स विल कीप द नीडल सेफ, बट वो दूसरे पेशेंट हर बार घुमा देंगे वो नीडल. सो यू हैव टू कीप ऑन आस्किंग अगेन एंड अगेन
to the patient कि अरे दूसरा needle, otherwise you have to keep on going to the nursing counter and searching for one needle. So keep a bunch of needles with you every single time. Let the patient keep the needle. Okay, just prick them, see the HGT. Okay, either click a picture or just write it. Don't even click a picture, it's very tedious. Write it on your paper. Okay, move on and go to the next patient. सो HGT भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है. दिस इज द सेकेंड टिप. थर्ड टिप विच आई विल गिव यू इज दैट कि बी यू शुड, आई एम नॉट सेइंग यू शुड बी फ्रेंड्स, बट यू शुड हैव अ गुड बॉन्ड. You can try to have a good cordial and if possible a friendly bond with the sisters and all. So if you have a good bond with the sisters and brothers, things become very easy. Now things of what sort, right? So what happens is that at night you have to check HGTs. kabhi kabhi people who have a tendency to go into hypoglycemia or hyperglycemia. So for those patients, in which we are suspecting that they can either go into diabetic ketoacidosis or diabetic hyperosmolar coma, for type 1 and type 2 diabetes people respectively. For the people in whom we are suspecting that, or the people who had a past history of going into hypoglycemia in past, for those patients we check the HGT at 3. So sometimes twice in the night at 2 and 5 and sometimes only at 3. रात को एक बार चेक करते हैं. अभी आप घर जाके आप वापस नहीं आ सकते हो, आप रूम में भी हो, एक HGT के लिए आप नहीं आओगे. सो इन अ कंटेक्स्ट ऑफ दिस सॉर्ट जस्ट टेक द सिस्टर्स नंबर और द ब्रदर्स नंबर, आस्क देम कि प्लीज़ उनका HGT करो, दे विल इन्फॉर्म यू द HGT. Okay, you can do that. If it is not possible, then you can ask your co-PG, your co-intern होता है, वैसे co-PG होते हैं, co-PG को आप बोलो कि प्लीज़ HGT करो. बट दे आर ऑन कॉल वाले जो co-PG होते हैं, बट ऑन कॉल वालों का खुद का काम बहुत होता है. दे माइट नॉट बी इन अ स्टेट टू डू इट एज क्विकली. Okay, but still you can ask them, but preferably ask the sisters to do that. Okay, and then inform you the HGT. Okay, then this is the third tip. Then there are more 4, 5, 6, 7 and 8 tips. Fourth one I will discuss. 5, 6, 7, 8 I'll be explaining it in the next video. The fourth tip which I would like to give people is that कि यू शुड ऑल्सो टेक नंबर ऑफ द पेशेंट का नंबर लो. एंड आई एम नॉट सेइंग टेक द नंबर फॉर ऑल द पेशेंट्स, बट समटाइम्स व्हेन यू आर सेंडिंग द पेशेंट, आई गिव यू एन एग्जांपल. एक बार मैंने सिस्टर को बोला था कि सिस्टर HGT करो ना पेशेंट का. उसने नहीं बोला था मुझे बिकॉज शी डिडंट लाइक मी. लाइक वी वेर cordial but we were not on very good terms and all. Okay, we just cordial work but we didn't necessarily like each other, so she didn't do that extra thing for me to check the HGT of my patient. So in a context of that sort, अभी मुझे मेरे पेशेंट का HGT चाहिए रात को. मैं आ तो नहीं सकती रूम से, ठीक है, बिकॉज अगर कोई मदद नहीं करता तो आना पड़ता. को-PG को पूछना ये सेकेंड ऑप्शन था, बट उससे पहले भी एक ऑप्शन था. सिस्टर ने नहीं बोला. आई हैड टेकन द नंबर ऑफ दिस पेशेंट. सो पेशेंट्स रिलेटिव, सो पेशेंट के रिलेटिव को मैंने कॉल किया और मैंने उनको बोला था कि अंकल आप जो है प्लीज़ चेक द HGT ऑफ योर डॉटर एंड लेट मी नो. सो वो जो लड़की थी, सो हर केस वॉज टाइप 1 डायबिटीज़, ठीक है. इन हर कंटेक्स्ट, इन हर केस आई नीडेड हर HGT फॉर ऑल ऑफ दिस रीजन्स, राइट. नीदर डू आई वॉन्ट हर टू गो इन टू हाइपो नॉर डू आई वॉन्ट हर टू गो इन टू हाइपर, राइट. सो मुझे उसका HGT चाहिए था. सो मैंने अंकल को बोला दे हैड देयर ओन HGT किट, ठीक है. डायबिटिक पीपल स्पेशली टाइप 1 पीपल दे हैव देयर HGT किट्स. सो शी डिड इट, शी चेक्ड इट एंड शी टोल्ड मी. अगर वो भी नहीं होता देन आई वुड हैव टू आस्क माई को-PG. वो भी नहीं होता तो फोर्थ ऑप्शन था खुद आना पड़ता मुझे. सो इट्स गुड इफ यू टेक द नंबर ऑफ द पेशेंट्स. ऑल्सो आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल व्हेन यू शुड टेक द नंबर ऑफ द पेशेंट्स. कि जब अभी आज ही पेशेंट को कैसे होता है कि ऑन कॉल के दिन पे आपको पेशेंट को USG एब्डोमेन पेल्विस के लिए शिफ्ट करना होता है और चेस्ट एक्सरे के लिए शिफ्ट करना होता है, PAView. तो सब पेशेंट्स का न्यू एडमिशन्स का हम ECG, HGT, एक्सरे, USG करते ही है. तो एक्सरे USG करने के लिए माउशी अकम्पनीज द पेशेंट, करेक्ट. ऑल द पेशेंट्स विद देयर रिलेटिव्स गो डाउन अलॉन्ग विद वन माउशी. माउशी ड्रॉप्स द पेशेंट टू एक्सरे एंड शी डजंट वेट अंटिल सब पेशेंट्स का एक्सरे हो जाता है. वो सिर्फ ड्रॉप करती है उनको और उनको बताती है कि ठीक है आप सबका एक्सरे होने के बाद आपको USG के लिए जाना है.
ठीक है। तो वो उनको सिर्फ यूएसजी रूम दिखाती है कि यहाँ सामने से राइट और लेफ्ट और वॉट एवर। सो एक्सरे होने के बाद आप यूएसजी करने के लिए जाओ, बट देर इज़ अ हाई, तो माउशी डजंट वेट बिकॉज द स्कैसिटी ऑफ माउशीज एंड मामाज, यू नो. So she comes back. So now what happens is that ki in a context of that sort, you there is a possibility that patients would get confused. ओके और उनको वो भूल जाएंगे, वो सिर्फ शायद यूएसजी करके ही ऊपर आ जाए, एक्सरे करके ही ऊपर आ जाए, एक करके ही ऊपर आ जाए. आपको लगेगा कि पेशेंट ऊपर आ गया मतलब सब हो गया है, राइट, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी. सो यू हैव टू टेल टू द पेशेंट्स कि आपका एक्सरे होने के बाद आपको यूएसजी के लिए जाना है, आपको कोई भी दिक्कत है आप मुझे कॉल करो, आपका एक्सरे होने के बाद मुझे कॉल करो, फिर मैं दूसरे मावशी को भेजूंगी यूएसजी के लिए, व्हाट एवर. सो ईदर यू सेंड अनदर मावशी और यू जस्ट कोऑर्डिनेट विद देम ऑन फोन. Okay, so that's why taking the number of your patients is very important. So these are the 4 important tips which I have given you, which will save your time. क्योंकि क्या होता है पता है, if you don't get the USG और chest x-ray में से एक भी नहीं हुआ ना, आपको आपके JR1s बोलने वाले हैं, क्योंकि उनको उनके आपको आपके JR2s बोलने वाले हैं, क्योंकि उनको JR3 से सुनने को मिलता है, राइट. सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ यू नो सेफ फ्रॉम ऑल द अननेसेसरी फायरिंग. वो तभी आप ये रीज़न नहीं बोल सकते हो कि मैंने भेजा था, वो पेशेंट ऐसे ऊपर आ गए, माउशी और दे डोंट वांट टू लिसन टू दैट, दे जस्ट वांट देयर वर्क डन, राइट. So these are the 4 important tips which I have given you. There are remaining 4 important tips which I will be giving in second part. Till then, bye, take care. Thank you for watching this video till the end.